This is Charan, your yoga partner and the founder of Yujinexhale. So first of all, thank you so much for sharing your love and blessings on our last video of Surya Namaskar. Trust me, it means a lot to us. So before we go ahead with our next series of videos, just wanted to have a short discussion and introduction with you people. बहुत सारे लोगों के कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे, Yujinexhale, what does that mean? मीनिंग क्या है? काफ़ी यूनिक नेम है, या इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस ऑल्सो. There is a reason behind that why did we keep this name. So युज जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है जुड़ना, एक होना. एंड इनएक्सेल जो है ये कॉम्बिनेशन है इनहेल एंड एक्सेल का. ये आपकी योग की जर्नी शुरुआत होती है एंड दिस इज हाउ यू कनेक्ट एंड व्हाट दिस कनेक्शन इज. ये जो कनेक्शन है दिस इज द कनेक्शन ऑफ सोल विद ऑलमाइटी. सो व्हेन यू गेट यूनाइटेड, दिस इज व्हाट युज इज ऑल अबाउट. एंड to connect, to unite, you need to inhale and exhale. And this is how Yujinexhale was born. Now, next question. कौन कर सकता है योग? क्या हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, या ये सिर्फ यंग लोगों के लिए है? क्या बुजुर्ग लोग कर सकते हैं इसे, या हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ होना चाहिए? सब गलत. हम सब कुछ कर सकते हैं जब यहाँ से हमारी इच्छा है तो योग हम सबके लिए. On this channel we gonna talk about yoga, some inspirational content and spiritual content. So we're going to go step by step. योग के हम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके नुएंसेस को पकड़ने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ के फ्रॉम initial level to the advanced level. So this is how we're going to go ahead. But before I leave today, I have a question for you. ध्यान से सुनिएगा. जब हम सांस भरते हैं तो हमारी जो टमी है, हमारी जो बेली है, जो पेट है, वो बाहर की तरफ आता है या फिर अंदर की तरफ? I repeat, when we breathe in, so our tummy goes in or out. Think and comment. और इसका जवाब आपको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे. We're going to meet you in the next video. Till then, stay fit, keep inhaling and exhaling. See ya.